Namaste. Good morning to everyone. I am Ms. Tanvi Ghole. Welcome you all to this faculty development program on transforming teaching learning process through modern pedagogical techniques. So today is the day 2. The sessions of the day 1 were quite awesome and very informative. So we will start with the day 2 sessions. So we have the first session, which is on factors to consider while preparing for e-learning. And we have today's guest, our Miss Professor Vaishali Malkar ma'am. I welcome Professor Vaishali Malkar ma'am. She is the Vice Principal of Vidyalankar Polytechnic, and she has 19 years of experience in teaching. So I welcome you, ma'am, in this program. And I also request you to start the session. Thank you. Thank you, Tanvi. I hope I am audible to everyone. Yes, ma'am, you are audible. Okay, fine. Yeah. Okay. Am I host now, Tanvi? Yes, ma'am. You can. I'll unshare the screen so that you can share the screen. Yeah, please. Okay. I think now it is in view. Fine. Okay. Let me share my screen to all. Sharing my complete screen so that I can switch from one application to another whenever it is required. I'm sharing the sounds also, a few videos we want to see. So I'm sharing my sound option. Is my screen visible? Tanvi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine, fine, fine. Nice. Nice. Thank you very much. Thank you, everyone, for allowing me to do this presentation in today's program and in this FDP rather. And this FDP is much needed, I feel, for considering if we want to transform the education. Now everyone knows about NEP, that is National Education Policy 2020. And in that policy, what we have already seen that we had a program earlier last year on NEP, and there we have seen that the transformation is needed. Now, that is no doubtfully everyone knows here, all participants knows that the transformation of education system, education sector is needed. And one of the key area in that transformation, digital transformation, is e-learning aspect. Now here in today's presentation for next 1.5 and 2 hours, we will try to see various aspects of e-learning, and in that e-learning, we will also try to understand not only the concept of e-learning, but we will also try to learn or explore more and more about how to create e-learning process and how to execute them. Okay, so today's topic is, as already shared with you, factors to consider while preparing for e-learning. Myself, Vaishali Malkar, I'm working in Vidyalankar Polytechnic. As just Tanvi said, I completed my master's in computer engineering, and now I'm pursuing my PhD right now from Mumbai University in the same field, that technology usage in
how we can use more adequate personalized computer system or e-learning equipments for the education sector. That is my PhD topic also. So I'm taking this seminar as opportunity to discuss with multiple faculties. All the faculties may be more experienced than me and having may have more insights about this particular topic. So let's not do this webinar as one-sided webinar. I'll please, if you share your views and give inputs through the chat box time to time while this presentation is going on. At the backdrop of this, my presentation, if you could see, I have a very nice picture I got from YouTube, obviously. And here you see 75 years of completion of our independence, and we need to enter into education. So we really need to shift India to the new era of education. This is the symbolic picture of that. And let's try for that. Let's start with the presentation. Yes, so today we will explore 5 things. First, we will try to understand what is e-learning, what are the concepts and need of e-learning. I'll a little bit run this, 2-3 slides are there, and I'll run these slides faster because I don't think that any one of teachers are not aware with the concept of e-learning or concept of need, concept of e-learning and need of e-learning. Then we will just focus in our second module that prior to designing a e-learning course, once the concept is understood, and if we need to observe or need to develop an e-learning course, then how to design it, how to what are the factors to be considered before designing, that is prior to designing course, that we will discuss. It is very much needed to understand prerequisites. It is needed to understand various you may say not only prerequisites of the students, but conditions, scenarios in various aspects where education is imparted, background of the students. So these all things we needed to observe. That is what we will see, what are those factors in prior to designing this module. In our, just let me on the pointer. We will also, in next part module, we will see the designing, how to make e-learning course design effective. How to design an effective e-learning course, what are the factors for that. Next will be how to ensure the successful implementation of an e-course. Now, when we design a e-learning course, no doubt how much good that course is technology wise. We all are, I assume that all participants are with the technology background. But even though it may be domain expertised made module or say course, then also courses do get fail. Now, what could be the reason behind it? What could be the what are the factors which are impacting on that particular implementation? So that we will discuss in this module. And last one will be the how to communicate effectively the e-learning. There may be some theoretical slides you will get or some philosophical things you will get here. I have tried to introduce some
introduce some examples and some exercises and videos while doing this. फिर भी अगर आप सब लोगों को कहीं पे ऐसा लगेगा कभी कि नहीं ये कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये ओके है या फिर कुछ और एडिशनल इनपुट्स आपको इसमें देने हैं, तो यू कैन प्लीज पुट इट इन द chat box. Okay, nice. Now I just move ahead with the presentation. So e-learning concept and need. This is our first module. Now I would love to understand from the participants that what are your thoughts? What are your thoughts? Let me join from another device so I can see the chat box also. Just I'm taking one second break. I want to see your responses also. Yes. So now at the same time, I can. Okay. Now it won't disturb. Fine. So please give your response on the chat box when we move ahead. Fine. So now let's start with e-learning concept and need. E-learning concept and need. So first, let's understand the concept. I would like to know from the participants first, what you mean by e-learning. Just 1 or 2 words you need to elaborate e-learning. I'm waiting for the responses in the chat box. What are your thoughts about e-learning? Or what do you think? What is e-learning? All participants, please do type in the chat box. What is e-learning? Just 1 or 2 words. What is e-learning? Yes, participants. Because this would be a discussion, we will explore, me also and you too. It won't be just because ये तो अभी सबको पता ही होना चाहिए होगा ही. Rather, yes, got one. Yeah, this is my question only. Hello, ma'am. Yes. E-learning is a system-based learning with the help of electronic resources. It is known as e-learning. Correct, ma'am. Correct. Very much correct. Yes. Anyone else? I couldn't see in the chat box. Okay, fine. Who answered this question? Just whose voice was it? Can I know the name, please? Can I know the name, please? Before speaking, if you tell your name, that would be appreciated, please. Hello, ma'am. Miss Poonam Chavan. Poonam Chavan. Yes, Poonam ma'am, you said it very correctly that e-learning is what we mean, that with the help of electronic equipments, if we are learning some courses or by the means of electronic equipments, when we start teaching learning process, then it can be said as e-learning. Yes, so, ma'am. Yeah. Thank you. Yes. So e-learning, often known as online learning or electronic learning, and it is the process of learning through electronic media or electronic technologies. Now, what are the electronic medias and electronic technologies? Usually, we consider it as a computer. Now, I am taking webinar here
I'm talking with you all electronically. Here we are using network, we are using routers, we are using internet, we are using computers. Maybe you are listening this particular webinar through your mobile phones. So all electronic equipments we are using to deliver this particular course. So oftenly it is known as online learning. But though it is known as online learning, it is not compulsorily online learning. Sometimes it is offline learning also, but with the help of electronic medium or electronic technology. So e-learning is described in simple language, learning that enables electronically. So that's what we can say, e-learning. So when we are doing e-learning courses, we are designing e-learning courses, that time student can access their course material whenever they want. This is the key feature. This is the key feature. And students are getting the resources to learn whenever they want and wherever they want. So they can sit at a remote place and they are doing learning with by the means of electronic enable. That is the major idea. That is the major concept of e-learning. So after spending 2 years in COVID era, everyone know that what is e-learning and online courses. So multiple online courses, degrees and other forms in online learning are most common ways that e-learning e-learning occurs. I have here a YouTube clipping here, a very simple clipping. Just let me. Yes. Just trying to show you this particular clipping. I'll share the link with you. Sometimes while writing my newsletters, I tend to type so fast that there are spelling errors or some of my sentences just sound. To be in 39% of households by 2013. Education technologies have reshaped our world. We've created the largest knowledge network ever known. It's accessible to anyone, anywhere, at any time. And today's fast connection speeds allow rich and interactive multimedia to be enjoyed by millions of people every day. Is voice Australia audible has the to 5th highest internet usage relative to the population video voice is in the audible? Yes, world. madam. Yes, ma'am. And Yes. the biggest growth Yes, in ma'am. online use can be seen in the 55 to 64 year age group. Wireless mobile is our fastest growing internet technology, and mobile broadband accounts for almost half of all internet connections. These factors have influenced our learning landscape and are fueling the growth of modern learning. Harnessing this technology in the workplace is a powerful and effective way of passing on corporate knowledge. A rich learning experience means a higher impact learning experience that's not only educational, but more engaging and more motivating. With more people working in widespread locations, the cost of trainers, travel, and being out of the business can make traditional training methods prohibitive. Online courses are available anywhere with an internet connection, have minimal disruption to work routines, and can be delivered more than once without incurring more trainer or venue costs. Online learning also allows rich, interactive experiences that are very difficult to replicate in a classroom, such as simulations, games, and mobile applications. And from a corporate perspective, you're in control of how your brand and message is going to be conveyed. E-learning offers an effective and autonomous experience at a pace that suits the individual learner. E-learning materials also provide the support your people need at the time they need it. So from the first exposure to fresh knowledge, skills, and information to revisiting the knowledge, it's available to them as they need throughout their day. Whether helping your staff develop new skills, instilling a positive work culture, creating a safe and compliant environment, or providing business information, e-learning impacts positively on learners in most situations. Using technology to build effective blended learning programs
Interspersing digital and physical interactions provide a richer learning experience. And the future? With mobile internet, our fastest growing internet technology, and tablet computers forecast to be in 39% of households by 2013, it's not surprising that learning is going mobile too. So what does that mean for you? Where's your learning plan heading? Hey, Okay, thank you. So that is what is e-learning. E-learning is, and we have seen a sample of how the e-learning videos are being presented. Now, this such kind of n number of videos available for various topics, various courses, and everything. Now, really, we do need e-learning further to understand. अभी बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि अभी अगला 2 घंटे तक क्या हम लोग सीखने वाले हैं. ये पता है हमको ई लर्निंग है, ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं, अभी आपने वीडियो दिखाया, ये भी एक टाइप का ई लर्निंग है, और हम लोग ये सब यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, हम बना रहे हैं, हम लोग कोर्सेज भी ले रहे हैं, वेरियस बुक कोर्सेज भी अवेलेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेनी थिंग्स अवेलेबल. सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू we are going to learn further. So I would like to just, we will fast recollect the concept, and then I'll specify the need, why in India and why at our scenario it is more needed to learn about e-learning. Now this diagram is showing you the various benefits of e-learning. Obviously, now this is ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि e-learning, yes, it is cost effective and time saving. Why it is cost effective? Obviously, you are not having physical resources use करने का जरूरत नहीं है, जैसे कि classrooms, जैसे कि notes, handwritten notes, या फिर printed pages, nothing. So it is obviously cost effective, and physical resources खड़ा करने के लिए time लगता है. So this is time saving also. It is self-paced for whom? Self-paced for students and self-paced for teachers also. Teachers once create it and upload it, then students, whenever it is required, that students can refer it. Now, for example, in today's presentation, there might be 300 and some odd participants are there, but now joining 157. Further, all those participants who are not working, couldn't join now, they can see this video afterwards. That will be uploaded. So it is self-paced learning. It can be happen as per the convenience of student as well as convenience of teachers. Okay. Now, next is higher knowledge retention. Retention is, see, acquiring knowledge is acquiring knowledge is one thing, and retaining that knowledge for longer time, or remembering that knowledge for the longer time, is another thing. So e-learning helps you to retain as long as possible, because abhi main bhul gayi samjho lecture, and I have that lecture recording with me, or I have notes, e-copies of that particular thing, then I can further refer it for afterwards. So that is what we call as higher knowledge retention. It can be retained, it will help you to refresh. So it becomes, or it can be retained for the longer time. You can easily track the course, teachers as well as students, how much it is completed, how many students have completed, and what is the progress of the students. It is easily available. So it is easy tracking. There is always
room for the discussion. If you want to create, request you to please unmute, please mute yourself, all teachers. Yeah, thank you. It encourages sharing. Obviously, when many students at a time doing a single course, they are sharing their ideas. And obviously, they are also not only sharing their ideas, but if any resources, additional resources they are getting, that also getting shared. So this ability of sharing is encouraged to the among the students. Okay, and large target audience base. Now here, in support of this particular slide, I have 3 case studies here to justify these all benefits. Now, first case study is of Airbus. Airbus is a European aerospace giant. We all know that it is a airways. Now they are having 134,000 employees, and they follow Six Sigma quality measures. So when they follow that measures, they keep their staff learned or updated. So every year, उनके ऐसे millions of pounds खर्च होते थे for just for the training of the staff. And जब तक एक staff को training करके last वाले staff तक पहुंचते थे, नया update आ जाता था, तो training is like ऐसा continuous going activity उनका रहता. So after some thought, they moved, that organization moved towards e-learning. Actual training से वो e-learning की तरफ shift हो गया. उन्होंने क्या कर दिया, एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दी और उसमें सारा लर्निंग मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या फिर जो भी मटेरियल उनको लगता है कि एम्प्लॉइज ने पढ़ना चाहिए, फॉर एम्प्लॉइज, दिस ई लर्निंग दे हैव डन फॉर एम्प्लॉइज, एंड दे हैव क्रिएटेड वन इंफ्रास्ट्रक्चर, द नेम दे हैव गिवन इज पल्स, पल्स करके नाम दे दिया उन्होंने. एंड ये जो मटेरियल था, नाउ इट इज एक्सेसिबल टू ऑल एम्प्लॉइज विद इन अ क्लिक, तो उनका टाइम बच गया. फिजिकल ट्रेनिंग उन्होंने पूरा बंद किया. दे हैव सेव्ड multi-million pounds cost saving per year in their business. So this is what justifying the point that cost effective and time saving. And obviously it is very easy for their HR to track now which employee have completed which courses and that all, because certificates are getting generated. So it is fully automatic now. And see the number of employees, 134,000. So large target audience base. अभी ये एग्जांपल था जहां पे एक कंपनी जिसके फिक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे, लेकिन कुछ कोर्सेज जो हम करते हैं वो ऐसे भी होते हैं जहां पे हमें कितना ऑडियंस एग्जैक्टली जनरेट होने वाला है ये पता नहीं होता है. ऐसे केस में हम लोग क्या रेफर करते हैं, वहां पे ई लर्निंग हमको हेल्प करता है? द आंसर इज यस. गूगल क्लाउड, कोर्सेरा, EDX, अपने अभी IIT के जो IITX करके जो उनका MOOC courses है, that MOOC courses, स्वयं, NAPTEL courses, now that are the courses created and just uploaded on particular server website. They have created a university like environment over there. The scenario based classes are there. A student can choose from all those courses which are called as massive open online courses. Those are open courses. Here the first example given was close one, not open, close to that particular organization. Here it is open e-learning courses, which we call as MOOC courses. So these are the two examples where which again he see here large target audience. जो भी कोर्सेरा पे कोर्स है या फिर अपना स्वयं पे है, नापटेल पे है, वो कोर्सेस पता नहीं कितना ऑडियंस उसको रिस्पॉन्ड करने वाला है, कोर्सेस को कितना नहीं करने वाला है, बट कोर्स क्रिएट करके डाला जाता है एंड दैट कोर्सेज आर बीइंग लर्न्ड बाय द यूजर. इसमें ट्रैकिंग का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इट सर्व्स टू द लार्ज टारगेट ऑडियंस. एंड ऑब्वियसली अगेन इट इज सेल्फ पेस्ड.
there is, you can create it again and again. You can update some course. There is always room for the you can create and discreate. Fine. Now, third example is of further more advanced thought, I will say, because this is in India, it is up to thought level right now. A completely virtual university. This Google Cloud, Coursera, they create university-like environment, but they are not universities. But now next era, जो आगे का जमाना आने वाला है, वो यही आने वाला है कि completely virtual universities. You get degree, you get admitted, you get degree. ऐसे courses निकलेंगे जो आप वहीं पे आपको learn होगा, आपको bachelor degree मिलेगी, master degree मिलेगी online. No need to go to college and universities. And this is not, क्या बोलते हैं उसको, एक अगर हमको 10 साल पहले अगर कोई बोलता था कि ऐसा होने वाला है क्या, तो शायद हम आंसर देते थे पता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर 10 years पहले अगर कोई पूछता था, तो we might have said कि अरे how to possible not to going to university, not to going to college and getting the and we will get the degree. But now it is possible. University of Phoenix and Capella University, both universities are completely virtual university. Completely virtual universities. The world is moving towards classes online. So better we get prepared for that. We get prepared for that. Zyada time nahi lagne wala. As India is always being seen not only a market for the any other thing, but in the area of education, conceptualizing, India is considered as pioneers. जो concepts है, learning concepts, आज हम लोग करते हैं कि अमेरिका ने क्या किया उसको वैसा फॉलो करते हैं, ऐसा कंट्री में ये सिस्टम है, हम उसको फॉलो करते हैं. Request, please mute yourself. रक्षाबंधन है. Request to mute you. Thank you. So now the things are going to change. And Manisha, what is the problem actually? If I am a host, it should allow only me to speak. Can you do that, please? Ma'am, I am muting all, but there is a one option they can unmute themselves. Achha. I request all participants, please. When I'll ask you to unmute, that time only you please unmute yourself. Thank you. Thank you. So here it is, like the virtue is changing and complete scenario is going to change. अगर ऐसा condition आने वाला है कि everything is going to be completely virtual universities and ऐसा, तो we really need to prepare. We need to prepare, and that's why I urge for the changes, or I urge for the more and more learning about how to take e-learning courses. That's why this particular topic has been chosen. Now, if we look at India, there are some key challenges. Before moving to those 5 key challenges, I would like to tell you all the current scenario. Now, what is the current scenario in India? E-learning चालू है कि नहीं? Yes, चालू है. सब जगह पे सारे स्कूल के टीचर्स, सारे कॉलेज के टीचर्स, everyone creating videos, creating presentations, uploading it, running the कितने तो टीचर्स, प्रोफेसर्स ऐसे भी हैं जिनके कोर्सेज MOOCs पे है, YouTube पे है, कोर्सेज चल रहे हैं.
सर्टिफिकेट्स भी मिल रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑलरेडी सेट और पता है सबको. बट द मेजर चैलेंज इज about an e-course is what, as and while designing a e-course, what we should understand is background of the student, whether students are prepared to take your e-learning course, whether the condition or situation is available that if you float a e-learning course, whether that course will be adopted by students, in what percentage it will be get adopted. देखो इंडिया का जो लोक संख्या है वो itself is a huge number. 130-150 करोड़ तक अभी पहुंच रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ा नंबर है. तो हम 1% भी बोलते हैं ना तो बहुत बड़ा आंकड़ा हमको दिखाई देता है, बट ऐसा नहीं है. इफ वी लुक एट द परसेंट एरिया, कि परसेंटेज में अगर हम बात करेंगे तो we are lacking in few things. We are not reaching to the all students where that knowledge should reach. Just अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक न्यूज पढ़ा. In this COVID conditions, in COVID situations, 50%, 50% students got dropped from their education, and that education is probably higher education. That is higher education, when I'm saying, that means 11th के आगे का education. जैसे ही स्टूडेंट 18 साल तक का बन रहा है, 16 या 18 साल के बीच में वर्किंग हैंड आ जाता है, तो वो वैसे स्टूडेंट ड्रॉप हुए हैं. हायर एजुकेशन का कंडीशन मतलब ऑलरेडी वैसे भी ओनली 15% स्टूडेंट हायर एजुकेशन को जा रहे थे, 15% सिर्फ जा रहे थे, उसमें से भी 50% ड्रॉप हो गए लास्ट 2 years. So the conditions are, where are we reaching to the students? So we need to understand what are the challenges. Because when we will developing, when we are developing a course, this is the important factors to understand the background or to understand the of the students. Okay, so let's try to see the situation right now. So you will agree with my statement that we really need to work on e-learning methods or technologies. So first challenge is access to digital devices and data cost. Now this is very important one, because an insignificant section of the people has proper access to laptop and computer. Students with desktop and laptop cannot use the internet due to the cost. ये बहुत important है. ये सिर्फ बात कर रही हूँ. In urban area also, in Mumbai also, only 5-6% students who are in this slab, who can access the laptops and computers. Okay, so this is first challenge. So when you're designing an e-learning course, you must know that you are designing that course for such students who may or may not have access to digital devices and data cost. Second point, a teacher should always keep in mind that there is lack of digital literacy and infrastructural support in India. Digital literacy कितना है इंडिया का? 21.3% only. 21.3% डिजिटल लिटरेसी है, लेकिन उसमें से भी बहुत कम लोगों को डेस्कटॉप का एक्सेस. इंटरनेट बैंडविड्थ क्या होता है पता नहीं, एडिक्वेट नॉलेज. अभी समझो फॉर एग्जांपल, अभी आप बोलोगे, आप हमको ये बोलने वाले थे कि ई लर्निंग का कोर्स एक डिजाइन करते वक्त क्या फैक्टर्स के ऊपर सोचने का ना. अभी समझो मैंने एक कोर्स बनाया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को यूट्यूब का एक वीडियो रन करके दिखाया. फॉर्चुनेटली वी हैव दैट बैंडविड्थ.
and that video is running smoothly at every end. वो अपना Zoom पे बराबर वर्क कर रहा है. बट पॉसिबल है कि अगर यही कोर्स आप बना रहे हो एंड आपने बहुत अच्छा वीडियो उसमें डाला है, but it is not observed by the students, or students are not able to run it because of the internet bandwidth is less. So equipments and digital technology का lack जो है, अगर वो होगा तो भी आपका कोर्स को हैम्पर हो सकता है. या फिर मैं अनदर लाइन में बोलूंगी, एज एन टीचर कम्युनिटी इन इंडिया, हमको इसी कंस्टेंट्स में अगर काम करना है, तो व्हेन आई एम डिजाइनिंग एन ई लर्निंग कोर्स, आई हैव टू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्टर कि बाबा मेरे सारे स्टूडेंट को डिजिटल डिवाइसेस होंगे कि नहीं. तो मेरा जो प्रोग्राम मेरा डेस्कटॉप पे दिख रहा है वो मोबाइल पे भी दिखना चाहिए. इट कैन बी अ 2 GB मोबाइल और 4 GB मोबाइल और 6 GB मोबाइल, उस पे भी दिखना चाहिए. सो या ऐसा हो सकता है कि उसको मोबाइल या डेस्कटॉप यूज करने के लिए नहीं आता है, अभी तक नहीं सीखा है, ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ. सो दिस टू every challenge which I will mention now, that has to be keep in back of the mind for understanding for whom you are making it. Okay, fine. Absence of skills. Teachers का problem है ये. This is not the problem with the students. As a teachers in India, अभी मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन काफी टीचर्स ऐसा है कि जहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने का प्रॉपर स्किल है ही नहीं. Because it is the major factor influencing in India. Even though you create a course, say for example, अभी created a course. मैंने आज एक कोर्स क्रिएट कर दिया कि ई लर्निंग कंटेंट्स कैसा डिजाइन करना है. ये कोर्स मैंने बनाया. अभी ये कोर्स मैंने बना के फ्लोट कर दिया. लेकिन अगर टीचर्स, जिनके जो मेरा टारगेट ऑडियंस है, टीचर्स, वही अगर इसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो क्या उसका यूसेज इस टीचर्स आगे स्टूडेंट्स को दे पाएंगे क्या? द आंसर इज नो. सो स्किल डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड. अभी उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं. अभी एक इशू मैं यहाँ पे जस्ट ऐसा ही फॉर द क्यूरियोसिटी सेक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एंड दैट इज 97,273 सिंगल टीचर स्कूल्स है इंडिया, जो टोटल नंबर ऑफ स्कूल के 9% के आसपास है. तो 9% स्कूल्स है जो सिंगल टीचर स्कूल्स है. अभी वो सिंगल टीचर क्या क्या करेगा? अभी आप सब लोग अर्बन एरिया के टीचर्स हो, आप सब लोग के लिए काफी सुविधाएं हैं आजू बाजू में, फिर भी आपको पता है कि कितना अलग अलग काम करना पड़ता है टीचर को. जहाँ पे सिंगल टीचर स्कूल है, वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी को बैकअप करेगा. ओके, सो दैट आर दी अनदर इशू एक्चुअली, लेकिन it is it. Another thing very important in India, when we are developing any e-learning course in India, we have to think about language barrier. 85% of population living in India don't speak English. Don't speak English. Now also, me, when I'm delivering this particular lecture, I'm trying to translate or trying to tell this points, sometimes in Hindi, sometimes in Marathi, maybe I'll possible. तो हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस जो है उनका, उसमें कोई ई कंटेंट्स अवेलेबल ज्यादा नहीं है. तो देखो, एज एन टीचर, अभी अगर आप ई लर्निंग कोर्स कोई बनाने चाहते हो, समझो कोई मैथ्स का टीचर है और वो मैथ्स का स्टैंडर्ड 11th और 12th के लिए मैथ्स का ई लर्निंग कोर्स बनाना चाहता है, तो he should make it in regional language. Here, this is now a little bit interrupting mute and unmute process. Okay, so the language barrier is one of the very important thing. Before designing a e-learning course, जो course developer है, he should think about this particular aspect also, that is language barrier. Language, if you design a course in regional languages,
that is going to be a hit course. मतलब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा. अभी भी मैं बोलते वक्त भी आपको आपके साथ में कभी हिंदी में बात करूं तो ज्यादा अपील होगा जब मैं ये ट्रांसलेट करके बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ. एंड दिस लैंग्वेज बैरियर इज बाउंड टू बी हैपन. अभी अगर आप चाइना का एग्जांपल लेंगे या फिर अदर कंट्रीज का, फ्रेंच का, फ्रांस का एग्जांपल लेंगे, इवन यू स्पेन का एग्जांपल लेंगे, इन सारे कंट्रीज ने अपने लैंग्वेज में ई कंटेंट्स बनाए हुए, कोर्सेज बनाए. वो इंडिया में थोड़ा कम है, जबकि 85% पॉपुलेशन को इंग्लिश आती ही नहीं है. फिर भी मोस्ट ऑफ द कोर्सेज, इवन नैपटेल के कोर्सेज आप देख लो, कुछ हिंदी में है, बट दैट इज वेरी लिमिटेड सोर्सेज. एनीवेज, तो अगर आप ये चाहते हो कि आपको एक अच्छा ई लर्निंग कोर्स बनाना है, तो आप ये चारों पॉइंट्स के ऊपर प्लीज सोचें. एंड फिफ्थ वन इज जेंडर इनइक्वलिटी. ये मैं अभी यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी फिलहाल. तो ये चार ऊपर के जो 4 पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर भी अगर हमने सोचा तो एक सक्सेसफुल कोर्स हम बना पाएंगे. एनीवेज, सो ये हो गया बैकग्राउंड कि इंडिया में मुझे एक ई कंटेंट कोर्स बनाना है, सॉरी एक ई लर्निंग कोर्स बनाना है. अभी यहाँ पे मैं एक जानना चाहूंगी, सारे टीचर्स के साथ बात करना चाहूंगी. यू कैन पुट इन चैट दैट व्हाट, मतलब यहाँ पे आप कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं, ये प्लीज आप डाल सकते हैं क्या यहाँ पे अपने चैट बॉक्स में. मतलब आई वुड लव टू see that whether you are teaching to diploma course or whether you are a school teacher, teaching to primary school or secondary school, just आप कौन से स्कूल को पढ़ा रहे हैं या फिर कौन से स्टेट ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं. कैन यू पुट दिस इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में डाल सकते हैं प्लीज. यस, I cannot see the chat. Manisha ma'am, they are allowed to put in the chat, na? Yes, yes, ma'am. Everyone is allowed to put a message in the chat box. Just I want to see that कौन से इसको पढ़ा रहे हैं, मतलब कौन से students को पढ़ा रहे हैं, whether it are primary students or secondary students or diploma students. ऐसा कुछ They have to choose the option. Sir, of- diploma students. नहीं, हाँ Madam, diploma okay, students. diploma students. Okay. Just Yes. chat में डालते तो मुझे number of people समझ में आ जाते थे. I have put the message in the chat box. हाँ, but I couldn't. I also put, madam. Yes, ma'am. I couldn't see that. मुझे- Go to chat box. More options. To Okay. chat box and select to Yes, everyone. yes. I could see here. Okay, fine. Engineering students, diploma students. Okay, fine. Yeah. So see, while everyone is putting that, I continue with my talk that when we are designing a e-course, now diploma teachers, they might be creating it for the diploma students that are engineering diploma I'm considering here. So it is technical kind of course. So technically enabled ऐसे कुछ courses बनाए जाएंगे. अगर कोई स्कूल टीचर्स होंगे तो वो बनाएंगे जो कोर्सेस जो मे बी साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, लैंग्वेजेस होंगे, ऐसे कोर्सेज होंगे. सो व्हेन वी आर डिजाइनिंग सच ऑल कोर्सेज, बिफोर स्टार्ट डिजाइनिंग द कोर्स, we need to understand few points that we are going to observe here now. मैंने registrations देखे थे तो most of the teachers are the polytechnic teachers of Maharashtra. So what we need here, we need to create a course which is engaging, interactive, and learner centered.
Engaging, that means once the student start your course, वो आधे में नहीं छोड़ना चाहिए उसमें. Your course design आपका इस तरीके से होना चाहिए कि स्टूडेंट को आगे क्या, अभी नेक्स्ट चैप्टर में मैं क्या पढ़ूंगा, या फिर देयर हैज टू बी सम वैल्यू एडिशन टू द स्टूडेंट. देन एंड देन ओनली student will keep engaged himself in your course. Next is interactive. Now, when you are learning or running a course, it has to be kept a two-way communication. As a speaker, you are delivering that course. At the same time, you should keep a space for the students to interact with you. Now that space can be in various ways. Now, like I'm trying to speak with you and talk with you in the terms of chats. Sometimes it can be some uploading of some picture. एक और एक exercise मैंने design किया है यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, कोशिश करेंगे. There may be some learners. We also should be. त्यानंतर मग कसं आहे बघ, आता काय काय पोरं तर डोनेशन आणि त्याला ट्युशन I request all participants, please mute yourself. Please mute yourself. All participants. मनीषा मॅम कोण आहे त्यांना पर्सनल असं नाही येते असं अरे अरे नाही ते कसंच होतं मी तुला सांगते. Manisha ma'am, please can you send personal message to whoever is there attending? त्याच्यापेक्षा बाबा तू ट्युशनला जा, feedback घेऊन. Yeah, because Jayashree ma'am, it is someone is and we are not getting who is exactly that one. I request all participants, please mute yourself. Please mute yourself. It is really a little bit disturbing when we get another voice in between. Thank you, whoever it is. Okay, so how the course design should be? It should be engaging, interactive, and importantly, learner-centric. What we mean by learner-centric, अभी जो हम लोग पढ़ाते हैं, classroom teaching, that is teacher-centric, and e-courses itself is self-paced. हमने बात किया थोड़ी देर पहले, उसका benefit है self-paced. Learner decide करेगा कि उसको कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है. So it is learner-centric training model. अगर आपको एक अच्छा learner-centric training model बनाए, मतलब पत्ते उसके हाथ में देने आपको कि भाई कब पढ़ना है तब पढ़, बट एट द सेम टाइम उसने इस तरीके से होना चाहिए कि एंगेज हो जाना चाहिए उसमें, उसने छोड़ना नहीं चाहिए आपका कोर्स इन बिटवीन. सो इफ वी वांट टू डू दैट, we must consider some of the factors which are listed over here. We will see one factor after another. Learning objective. You must be clear with your learning objective. Must be clear with the learning objective. Means ultimately what is the goal of that course? आप क्या अचीव करना चाहते हैं, स्टूडेंट को क्या सिखाना है एग्जैक्टली, बस उतना ही आपके कोर्स में आना चाहिए. तो वो कोर्स डिजाइन बाद में होगा, लेकिन पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए. आप सब टेक्निकल है, अगर एनबीए वगैरह सब आपको होता, आउटकम पता होना चाहिए कि क्या आउटकम होने वाला है मेरे कोर्स का, और वो आउटकम को मैं किस तरीके से अचीव करने वाला. सो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर यू शुड नो. यू मस्ट नो द टारगेट ऑडियंस. हु इज गोइंग टू योर टारगेट ऑडियंस. अगर मैं एक ई कोर्स बना के डाल रही हूँ, जैसे अभी ये कोर्स है, ई कोर्स है, दिस इज how to design a e-content or how to design a e-course. ये वैशाली मालकर ने बनाया कोर्स. अब मेरा टारगेट ऑडियंस फिक्स है, and that target audience is all teachers of secondary, higher secondary and technical teachers. तो ये मेरा ऑडियंस है. मैं जो भी प्रेजेंटेशन या फिर जो भी जैसे बनाऊंगी, it is for them. If I'm making a e-content
For nursery students or primary students, that will be with some cartoons, ये वो ऐसा. अभी मैंने टेक्निकल टीचर्स के लिए बनाया है, तो थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट वाइज और ऐसा ये लुक चलेगा. तो ऑडियंस कौन है आपका टारगेट, ये आपको पता होना चाहिए. यू शुड कंसिडर दिस फैक्टर. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप बना रहे हो, जो ई प्रोग्राम ई कोर्स आप बना रहे हो, उस ई कोर्स का कुछ बिजनेस गोल है कि नहीं, कि बस ऐसा ही फ्री ऑफ चार्ज करके मैंने डाल दिया मुफ्त पे, उससे मेरे को कोई अर्निंग एक्सपेक्टेड है या नहीं. क्योंकि अगर आपको अर्निंग एक्सपेक्टेड है तो ये जो एंगेजिंग फैक्टर है ना, इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इंटरेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर आपके बिजनेस गोल्स है. तो अगर आपका कोई बिजनेस गोल नहीं है, समाज सेवा कर रहे हो, ई कोर्स बना के डाल रहे हो, बस आपको लगता है कि मेरे पास नॉलेज है और ये सब लोगों तक पहुंचना चाहिए इसलिए आप दे रहे हो, तो ये फैक्टर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. लेकिन फिर भी कुछ भी हो, मेरा कोर्स एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव होना ही चाहिए. डिवाइस कॉम्पेटेबिलिटी, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि कुछ कोर्सेज हैं, अगर मुझे उस कोर्स में वीडियोस डालने हैं, उस कोर्स में मुझे अलग अलग असाइनमेंट सबमिट करवानी है, सब कुछ करना है, मेरे स्टूडेंट के पास कौन से टाइप के डिवाइस मुझे एक्सपेक्टेड है. समझो मैं एक कोई से फॉर एग्जांपल आई एम अ फैशन टेक्नोलॉजी टीचर एंड मैं एक फैशन टेक्नोलॉजी टीचर हूं, और वैसा मैं एक कोर्स बना के मैंने एक असाइनमेंट उसमें दिया है स्टूडेंट को कि फला फला ऐसा ऐसा एक ड्राइंग करके कैड में मेरे को भेजो. नाउ व्हेन आई एम गिविंग दैट असाइनमेंट इन दैट कोर्स, आई शुड थिंक दैट वेदर जो मेरा टारगेट ऑडियंस है उसके पास वो डिवाइस कॉम्पेटेबिलिटी होगा कि नहीं. एंड यूजुअली रिमेंबर, डोंट ऑलवेज थिंक अबाउट. इसलिए मैंने वो प्रीवियस वाला स्लाइड जो दिखाया, लिमिटेशंस जो की चैलेंजेस है इंडिया के, 85% लोगों के पास नहीं है एक्सेस फॉर डेस्कटॉप्स. अगर ऐसा कंडीशन है तो कैन आई एक्सपेक्ट कि इंडिया में जितने फैशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो सारे मेरा कोर्स अटेंड करें? वी कैन नॉट थिंक अबाउट इट. जैसे कि देखो, थोड़ा पुराने जमाने का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ तो शायद आपको पता चलेगा. आई एम कंप्यूटर इंजीनियर. सो जब मैं डिप्लोमा में थी एंड जब मैं डिग्री में आई तो वहां पे सब्जेक्ट था से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था. वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक है, दैट इज प्रेसमैन. ऑथर प्रेसमैन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक का नाम है एंड ऑथर इज प्रेसमैन. नाउ दैट बुक इज read by I think each and every computer engineer. तो इंडिया में जितने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं उसमें जितने बार वो कोर्स पढ़ाया गया है, हर एक कॉलेज में हर एक कोर्स में वही बुक वही ऑथर पढ़ाया गया है. What it means that anyhow that publisher प्रेसमैन बुक का या फिर प्रेसमैन ऑथर इज he reached to each and every college, each and every student by the means of what I don't know. लेकिन जितने लाखों इंजीनियर्स कंप्यूटर इंजीनियर्स बने हैं इंडिया में से, हर कंप्यूटर इंजीनियर ने वो प्रेसमैन बुक पढ़ा है. नाउ इफ यू एज एन क्रिएटर, अभी देखो ऑथर की जगह में खुद को रखो, मैं ये ई कंटेंट, मैं ई कोर्स एक बना रहा हूं. नाउ इट इज ई कोर्स, इट इज नॉट प्रिंटेड बुक, हाथ में नहीं जाने वाला. मैं चाहती हूं कि मेरा कोर्स हर एक कंप्यूटर, मैंने भी बनाया एक कोर्स, एक कंटेंट. समझो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैंने एक मशीन लर्निंग पे एक लिख दिया कोर्स, एंड वो कोर्स मैं चाहती हूँ कि एवरी कंप्यूटर इंजीनियर जो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है इंडिया में, हर एक के पास पहुंचे. तो व्हेन आई थिंक इन दैट ब्रॉड पर्सपेक्टिव, देन आई हैव टू think about device compatibility, that course should be visible to minimum configuration machine पे भी दिखना चाहिए and high end machine पे भी रन होना चाहिए. मेरे असाइनमेंट इसी तरीके से डिजाइन होने चाहिए कि सबको एक्सेसिबल हो. then and then only people उतना, मुझे क्या बोलते उसको,
रिस्पॉन्स देंगे या रिप्लाई देंगे, otherwise it is not possible. So this is the important factor that you have to think about device compatibility, because this is electronic devices के साथ चलने वाले courses है ना, that's why it is e-courses. So ये बहुत important factor है. So learn about objectives, decide your target audience, think about business you are going to earn, and device compatibility. This is the first part of the factors. अभी second part of the factors थोड़ा सा अलग है. ये था स्ट्रेट अवे, इतना तो सब कुछ ये सोचना चाहिए, इसेंशियल पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज ये जो राइट हैंड साइड पे है 4 पॉइंट्स, नेक्स्ट 4 पॉइंट्स दैट आर लिटिल बिट कैन बी और कैन नॉट बी, ऐसे टाइप के पॉइंट्स हैं, इसेंशियल्स नहीं. लेकिन ये भी क्या बोलते हैं कि यू शुड यूज इंटरैक्टिव एंड रियल लाइफ सिनेरियोज. रियल लाइफ सिनेरियोज का एग्जांपल देके आपको कोर्स के कंटेंट्स बनाने चाहिए, आपको स्पेस क्रिएट करना चाहिए, मॉड्यूल्स क्रिएट करने चाहिए. तो स्टूडेंट को अभी इतना पढ़ूंगा तो स्टार्ट एंड स्टॉप, एक कंप्लीटनेस का फीलिंग आना चाहिए. उसके लिए आपको जब भी आप कोर्स बनाते हैं ना, देखो समझो से फॉर एग्जांपल सेल्फ पेस्ड होता है, तो इफ आई एम मेकिंग अ 4 मॉड्यूल कोर्स and each module is for needs 2 hours study, say for example. अभी ऐसा थोड़ा मुश्किल है, क्लासरूम में भी नहीं बैठते बच्चे 2 घंटा एक साथ और उनको नहीं समझ में आता है. तो एक मॉड्यूल के अंदर भी मुझे सब मॉड्यूल्स ऐसे क्रिएट करने चाहिए कि एक मॉड्यूल खत्म करने के बाद स्टूडेंट को एक अचीवनेस का फीलिंग आना चाहिए. तभी स्टूडेंट को लगेगा कि यस आई हैव लर्न फ्रॉम दिस सब मॉड्यूल, एंड तभी वो खुद को उस स्पेस में डालेगा कि ओके हो रहा है मुझसे. आधे घंटे का किया, फिर आधे घंटे का, तो 4 सब मॉड्यूल, 2 घंटे का एक मॉड्यूल खत्म हो गया. हाफ आवर वो निकाल के उसने खुद का पढ़ाई कर लिया. सो यू शुड ब्रेक योर कोर्स इन सच अ वे दैट स्टूडेंट शुड एबल टू मैनेज, pace himself or herself to the learning of the course. That way that course has to be arranged. So this factor is to be considered before we start designing. And that course should be accessible. Obviously आपको कोर्स सिर्फ मैंने समझो अभी विद्यालंकार के ही सर्वर पे डाल दिया, शायद सबको एक्सेसिबल होगा नहीं होगा, कुछ फायरवॉल्स लगे हैं, तो ऐसे इसमें नहीं डालना है आपको. You should try to upload your courses as much public as possible so that the accessibility is more, and you should do or take the evaluation of course time to time. So these are the important factors which you have to think before starting designing. अभी तक डिजाइनिंग शुरू नहीं हुआ. Before starting designing you should think about these all factors. Now e-learning कोर्स का जो प्रोसेस है, it has to be well planned. बनाने का कोर्स, target audience, learning objectives should be clear. It should contain various forms. It should be realistic, engaging with device compatibility, and it should offer the convenience and flexibility to various type of learners. These factors you need to think before start designing an e-course. Now, let's move to the third module. That is, let's think about the factors which are used for design. अभी डिजाइन करना है तो सब बहुत सारे इंजीनियर्स हैं अभी यहाँ पे. अगर डिजाइन कुछ बनाना है तो हमारे पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए. So here I am offering you a framework which is a backward design. अगर e-learning कोर्स अगर आपको बनाना है और आपने सारे फैक्टर्स के ऊपर सोच लिया, अपना टारगेट ऑडियंस वगैरह सब सोच लिया, अभी एक फ्रेमवर्क लेते हैं और उस फ्रेमवर्क में अपना ई कंटेंट्स को, ई कोर्स को डालने का शुरुआत करते हैं. सो व्हाट इज दैट फ्रेमवर्क? 3 स्टेज का एक ऐसा डिजाइन है जो बैकवर्ड डिजाइन. नाउ व्हाट इज बैकवर्ड डिजाइन? एंड में आपको क्या चाहिए उसके बारे में पहले सोचो. दैट इज व्हाट कॉल एज द बैकवर्ड डिजाइन. दैट इज व्हाट कॉल एज द बैकवर्ड डिजाइन. सो एंड में अपने को क्या चाहिए? What I want at the end, that I want
मैं ई कोर्स बना रहा हूं ना, तो आई वांट स्टूडेंट टू लर्न. So my desired result is what? Learning by the student. And if that my desired result, I should get evidence of learning. So I should design the course in such a way that at the end, I should get evidence of learning from the student. Now, here is the one saying from Wiggins and McTighe. In 2000, they have said this, that one should start from the end, that is the result, and should get the evidence of learning. तो ये बैकवर्ड डिजाइन एक सजेस्टेड किया था, उन्होंने ही सजेस्ट किया था. अभी अगर इस डिजाइन को आप देखेंगे ठीक से, तो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द रिजल्ट. So what is your idea? What skills you want student to acquire? That you have to think first. And then you determine कि ये स्किल स्टूडेंट तक पहुंचा कि नहीं, इसके लिए आप असेसमेंट कैसे करोगे. तो थिंक अबाउट द असेसमेंट टास्क, ताकि आपके पास वो एविडेंस जमा हो. Once that assessment task is decided, to fulfill that assessment, स्टूडेंट ने क्या पढ़ना चाहिए वो आप सोचो. That is the third step. So actually your instructions and your content, वो जो बनेगा वो स्टेज 3 में बनेगा, स्टेप 3 में. अभी यही गलती करते हैं मोस्ट ऑफ दी ई कोर्सेज जो अगर हम देखेंगे. कैसे होता है कि भाई वैशाली मालकर को आ रहा है, क्या आ रहा है, मुझे मशीन लर्निंग आ रहा है, मुझे आता है, मुझे लगता है मैं सबको सिखाऊं ये मशीन लर्निंग, तो मैं ये कोर्स डिजाइन करना शुरू कर देती हूँ. आई एम डिजाइनिंग द कोर्स, ई लर्निंग कोर्स, मशीन लर्निंग का भला भला सब लिख दिया, सब एल्गोरिथम ये वो सब मस्त कोर्स बनाया मैंने. एंड दैट कोर्स इज फ्लोटेड असाइनमेंट के साथ में. मेरा एक्सपेक्टेशन है कि सारे स्टूडेंट्स उसको समझे और एक्वायर करें. बट पॉसिबिलिटी है ना कि जो स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेड है, स्किल्स क्या एक्वायर करना है, एप्लीकेशंस क्या चाहिए उसमें, उसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं है. मैंने वो बताया जो मुझे आता है. सी क्लासरूम टीचिंग में ऐसा ही होता है. क्या करते हैं हम क्लासरूम टीचिंग में, मुझे जो आ रहा है, जो सिलेबस दिया है बोर्ड ने या फिर जो सिलेबस दिया है यूनिवर्सिटी ने, वो सिलेबस में ले रहे हो और वो सिलेबस में दिखा रहे. ये आता है मुझे. व्हाट आई एम टीचिंग, दैट इज द साइंस. स्टूडेंट्स का स्किल मुझे जो आता है वो तुमको पढ़ना है, ये छोड़ के. नाउ ई कोर्सेज आर डिफरेंट. कंट्रोल देखो बच्चों के हाथों में, स्टूडेंट्स के हाथों में. दे विल लर्न व्हाट दे वांट. वो नहीं सीखेंगे जो आपको दिखाना है उनको. बंद कर देंगे ना अपना मशीन. ई कोर्स का तो कंट्रोल उनके हाथ में है, मशीन बंद कर देंगे. अभी देखो, समझो अगर किसी पार्टिसिपेंट को नहीं पसंद आ रहा है मेरा लेक्चर, जूम मीटिंग लॉग आउट करके चला जाएगा. कंट्रोल स्टूडेंट के हाथ में. सो आई शुड नॉट थिंक कि व्हाट आई वांट टू टेल देम. आई शुड थिंक दैट what skills they want to acquire. Okay, so that is the step number 1. Step number 1 is identify result first. फिर वो रिजल्ट को एक्सेस कैसे करेंगे, असेसमेंट कैसे करूंगी मैं, तो असेसमेंट टूल्स पहले करो. एंड देन यू गो फॉर द क्रिएशन ऑफ कंटेंट्स. यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसे ही दिखा है, थोड़ा सा फूड टेक्नोलॉजी का है. फूड टेक्नोलॉजी का नहीं है, ऐसे कार्टून्स मिले तो यही डाल दिया कि भाई केक बनाना है, ये पहले डिसाइड होगा. फिर केक बनाने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा और केक बनाने का मैं कैसे बच्चों को सिखाऊंगी. उसके बाद असेसमेंट टास्क मैं पहले देखूंगी कि अवेलेबिलिटी है क्या सब रिसोर्सेज का. फिर बाद में उस हिसाब से रेसिपी लिखूंगी. जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उस हिसाब से रेसिपी लिखा जाए. चलो अंडे अवेलेबल नहीं है तो एगलेस बना दे, है अवेलेबल तो विथ एग वाला बना दिया. सो दिस इज हाउ आवर रेसिपी चेंजेस एज पर द असेसमेंट, एंड असेसमेंट डिसाइडेड एज पर द अल्टीमेट गोल. सो दिस इज द फ्रेमवर्क. अभी इस पे और ज्यादा, ये जस्ट दिस 3 स्टेज फ्रेमवर्क इज देयर. एंड व्हाइल डिजाइनिंग द ई कोर्स,
you should follow this framework. So design is learner centric approach. कभी भूलने का नहीं है ये. You need to understand psyche of target audience. Think like them and then design the course. आपने जो भी e-learning course बनाना है, वो definitely is going to be a good e-learning course if you understand the psyche of audience. It is going to be the hit course. So a good e-course तभी बनेगा when you think about the target audience, what skill target audience want. Okay. So the step number 1 क्या था बताया कि identify desired outcomes. Okay, that is the step number 1. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन अपने मन में आने चाहिए while designing कि मैं क्यों बना रहा हूँ? Is it worthy? Whether it requires some understanding, what I am expecting student to learn. So why learners should take that course? What is the big idea behind it? Determine which idea, which skill आपको बच्चों को difficult होगा, easy होगा, जो भी level है. You should think out on these 3 factors and then find out your outcomes. Say for example, जैसे थोड़ी देर पहले मैथ्स का एग्जांपल लिया था मैंने कि मैथ्स का एक कोर्स मुझे बनाना है. ओके, से फॉर एग्जांपल फॉर 11-12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. उसमें कुछ टॉपिक्स है that are difficult to understand for the students and few topics are easy to understand. मैं क्या चाहती हूँ कि जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उनको सिंप्लीफाई करके बनाने का स्टूडेंट्स को देने के लिए कोशिश करें. दैट इज व्हाट इज माय आइडिया, बिग आइडिया बिहाइंड दैट कोर्स. तो ये डिसाइड हो गया. सो गेट अ टिक मार्क ऑन ओवर हियर कि मैंने आइडिया सोच लिया. फिर हम लोग ये सोचेंगे कि व्हाई लर्नर्स शुड टेक दैट कोर्स. दैट सर्वे हैज टू बी टेकन फर्स्ट of our target audience. Yes, they want it because learners should learn the difficult techniques of mathematics. उनको चाहिए वो. It is in demand. So this point is also tick mark. And as we know that skills are difficult, उसमें कुछ multiplication integration है, वो difficult जा रहा है बच्चों को. उनको एक थोड़ा integration आ रहा है, आगे का complex integration difficult जा रहा है. तो उसको उसमें मास्टर करना है. So first, while identifying outcomes, we should be clear that what we are going to offer through that e-learning course. And for satisfying this particular stage, you should design, you should know student psyche first. And to get the student psyche, you should take the surveys. So take the survey, understand it, and then only make the e-learning course. Now, how to make the surveys? What are the techniques to make the surveys? That is different module. शायद अगर टाइम मिले कभी तो मैं आपको वो भी एक हम लोग फ्लोट कर देंगे. Now next stage is what? अभी पता चल गया हमको कि टारगेट ऑडियंस क्या है और उनको क्या स्किल एक्वायर करना है. नेक्स्ट इज उसके हिसाब से असेसमेंट बनाना है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको असेसमेंट जो करना है वो एविडेंस whether it is satisfied or if student is getting 40 assessment test, तो I say कि it is I am satisfied, वो कोर्स पूरा हो गया. ये आपका लेवल है कि आपने एक एप्लीकेशन किया है और उस एप्लीकेशन को तो आप कहेंगे हेलो ऐसा है. So that you have to. Madam, please adjust your mic, ma'am. We are not able to listen complete statements. Which we are missing so many things. Please adjust your mic. Okay. एक मिनट. Is it audible now? Am I audible? Yes. Clear? Yes. Clear? Yes, madam. Sir, might be the problem at your network because my network is showing. No. I am into full signal, madam. This is happening from last 2.5 minutes only. अच्छा, okay.
fine. Otherwise, I was able. Now I have not changed my place. हाँ, नहीं, sir. It's okay, fine. You Is it trust me, madam. audible now? Now it is audible. Now it is audible. I'll tell you after 2 minutes whether continuously I'm able to hear or not. Okay, sir. Please let me know. Okay, fine. So let's move ahead. Assessment की बात कर रहे थे. तो assessment में हमको ये देखना है कि ऐसा क्या एविडेंस मुझे चाहिए कि मुझे लगेगा कि ये स्टूडेंट को मेरा कोर्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो बीच बीच में टेस्ट डाल दिया कुछ, या फिर कोई एक असाइनमेंट सबमिट करने के लिए बोला है. तो हाउ यू विल नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियंस? You have to think about this in stage 2. Stage 1, you have to think about target, outcomes. Stage number 2, you have to think about the assessment. Now, next stage will ask you to actual writing the contents of the course in the format which you reach up to in that framework. And while writing that content, you should think about the learning experience of the student. तो आपका UI क्या होगा, UX कौन सा यूज करेंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज रखना है कि नहीं, रियल लाइफ सिचुएशन. These all things you should think about while designing the last stage of your e-learning course. I'm again moving a little bit back. See, this is a framework to design a e-learning course. It is 3-stage framework which tells you about to understand psyche of the target audience first and identify exactly what outcomes you want. While understanding those outcomes, you should consider a few factors. Then secondly, you should think about the assessment techniques जो आप यूज करने वाले हैं. फिर उन assessment technique को ध्यान में रख के आपको अपना content लिखना है. So first stage, decide outcomes, think about ideas, skill what student want. Stage number 2, assessment task, evidence of understanding, क्या आपको क्रिएट करना है, एंड गेट द फीडबैक. तो आपका फीडबैक फॉर्म, असेसमेंट फॉर्म्स पहले रेडी होने चाहिए. उसके बाद आप कंटेंट्स लिखोगे, क्योंकि आपने जो कंटेंट में आपने बोला ही नहीं है वो आपने असेसमेंट में डाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा. एक ई कोर्स के लिए ऐसा ही होना चाहिए, आइडियल ई कोर्स, कि आपने जो कंटेंट लिखा है उसी के ऊपर आपका असेसमेंट होना चाहिए. इसलिए पहले असेसमेंट करो, फिर उस असेसमेंट के हिसाब से अपना कंटेंट लिखो. तो ये गलती स्किप आउट नहीं होता है कभी भी. सो दिस आर दी 3 स्टेज. ये 3 स्टेजेस में आपको आपका ई लर्निंग कोर्स को डिजाइन करना है. व्हाइल डिजाइनिंग, इफ यू गो थ्रू दिस 3 स्टेजेस, योर डिजाइनिंग इज गोइंग टू बी अ इफेक्टिव ई लर्निंग कोर्स आपको क्रिएट हो जाएगा. नाउ वंस दैट कोर्स इज क्रिएटेड, नेक्स्ट स्टेज इज implement it, load it and see how much students are giving response, कितने बच्चे enroll हो रहे हैं, कैसा हो रहा है, whether it is an. तो ये भी एक जो ई कोर्स बना रहे, as an author of that course, it is my responsibility to get it successfully implementation. ये नहीं कि मैंने कोर्स बना दिया, बहुत अच्छा बनाया, सब फ्रेमवर्क वगैरह सोच के, टारगेट ऑडियंस वगैरह अभी तक जितना हमने बात किया वो सारे फैक्टर्स के ऊपर सोचा और सोच के मैंने कोर्स बना के अपलोड कर दिया, अभी एक बार नैपटॉल पे अपलोड कर दिया, मेरा काम खत्म. ऐसा नहीं है. वी शुड एंश्योर दैट इट इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली. जैसा मुझे चाहिए उसी ट्रैक पे, उसी ऑडियंस के पास उसका सवाल जवाब पहुंच रहे कि नहीं, सॉरी वो कोर्स पहुंच रहा है कि नहीं, वो मुझे देखना पड़ेगा. सो नाउ सी, इसके पहले मैंने क्या बताया, टू डिजाइन अ गुड कोर्स, ऐसा मैंने वर्ड यूज किया था. नाउ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन will change your good course to the great course. See, great course कब बोलेंगे, अगर मेरा कोर्स है 100 स्टूडेंट यूज कर रहा है तो आई विल से गुड कोर्स. लेकिन वही 200,000 स्टूडेंट्स आर यूजिंग इट, ग्रेट यार, निकलता है ना मुंह से, अरे वाह ग्रेट, इतने स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं आपको कोर्स, पढ़ रहे हैं, कितने ज्यादा हिट्स मिल रहे हैं.
ये सब बात है. जब हम ई कोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो इट इज नॉट कि 60 के क्लास के सामने पढ़ाया मैंने तो सारे 60 बैठे रहेंगे मेरे सामने, ऐसा नहीं है. ई कोर्स का सक्सेस जो है, it is how many hits you are getting, how many students are completing your course. So whether वो successful implementation होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए मेरे कोर्स में, वो उस मेरे कोर्स गुड कोर्स को ग्रेट बनाएंगे. गुड टू ग्रेट. हाउ इट विल चेंज गुड टू ग्रेट? व्हाट आर दोज क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स बोलते हैं उसको, ट्रेट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो देयर आर 6 ट्रेट्स that a good course have, great course have. It should be goal oriented always. It should have engaging design without being distracting. कोई distraction नहीं चाहिए इधर उधर. बिना वो कोर्स कंटेंट के अलावा बाकी कुछ बात नहीं होना चाहिए. क्या होता है डिस्ट्रैक्शन, अगले स्लाइड्स में आएगा आपको. थर्ड इज इट शुड कंटेन रिलेवेंट एंड टारगेटेड कंटेंट्स. टारगेटेड कंटेंट्स होने चाहिए, रिलेवेंट कंटेंट्स होने चाहिए. कम्युनिकेशन का स्ट्रैटेजी डिजाइंड होना चाहिए, प्लान होना चाहिए. when I will upload, how I will send the notification of these e-courses, whom should I send the notification, how I will communicate with my students. That has to be planned, strategically planned. So communicate strategically. And your course should inspire people to act on it. अभी आज मैं ये 2 घंटे का अभी ले रही हूँ, छोटा सा कोर्स लिया. अभी ये अगर आप में से कोई मुझे ये फीडबैक देता है कि यस मैम वो वैसा टेक्निक्स यूज करके ना आई एम डिजाइनिंग माय ई कंटेंट कोर्स, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, और ये मेरे ऐसा मिल रहा है, देन आई विल से oh really my course has been inspired people to act and it is being successful, it is being great. And solid instructional design strategy. Now, when we are giving instructions, it should be clear, crystal clear instructions. It should not be ambiguous. So these 6 characteristics अगर आपके कोर्स में है, तो your course is definitely going to be a great course. Obviously, पहले डिजाइन करते वक्त का जो फ्रेमवर्क एंड जो फैक्टर्स हमने देखे वो तो है ही उसमें. Okay, fine. Now, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएंगे मेरे कोर्स में? देखो ना क्या क्या 6 गोल मुझे गोल हो सकता है ना, जब मैंने स्टडी किया, सर्वे लिया वगैरह और मैंने गोल डिसाइड किया, आउटकम डिसाइड किया, तो हो सकता है कि मेरा आउटकम थोड़ा गलत हो गया होगा, मेरा गोल थोड़ा इधर उधर हो गया है, मेरा टारगेट मिस हो रहा है या फिर कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल. तो कैसे मेरा कोर्स को ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट लर्नर ओरिएंटेड बनाया जाए, लर्नर स्पेसिफिक कैसे बनाऊंगी मैं? तो सिंपल आंसर है. अभी आप सब लोग टीचर हो, आप बताओ मुझे, आप जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं, आप अगर चाहते हैं कि स्टूडेंट को आप अपना खुद का फीडबैक लेना चाहते हो, तो आप क्या करते हैं? आप ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट को पता चल रहा है कि नहीं, मैं जो सिखा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं. ये आप कैसे पता करते हो? बताइए, आप बताइए. एनीवन कैन से. By asking the questions. Yes. What kind of questions you asked, ma'am? I have taught na, so I'll ask the question about that. Okay, that is one thing that you will ask about content. You are talking about content. That वो content का question. The content whatever I have. वो हो गया assessment, ma'am. That is assessment. Okay. That is assessment. Quick assessment बोलते हैं उसको. एक तो वो assessment हो गया. लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा वे ऑफ डिलीवरी करेक्ट है कि नहीं. मेरा अभी जैसे मैंने पूछा आप लोगों को कि समझ में आ रहा है कि नहीं, whether it is useful or not. हम पूछते हैं ना स्टूडेंट से
कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, कि डू यू वांट मी टू रिपीट वंस। हम पूछते हैं ना स्टूडेंट से कि डिलीवरी ओके क्या, मेरा आवाज पहुंच रहा है क्या लास्ट बेंच तक। तो वैसे ई कंटेंट में कैसे करेंगे हम कि भाई मैंने जो कोर्स बनाया वो डिजाइन विजाइन सब ठीक है ना, तुमको रीडेबल है ना सारे फॉन्ट्स। ये क्वेश्चन असेसमेंट में नहीं पूछते ना, कंटेंट के बारे में नहीं, बट वेदर इट इज रियली इंस्पायरिंग कोर्स और नॉट, ये फीडबैक हमको स्टूडेंट से ही मिलेगा। और स्टूडेंट आपके कंटेंट को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यू मे आस्क स्टूडेंट टू क्रिएट द कंटेंट्स। अभी ये थोड़ा सा अलग है। एक अच्छा कोर्स है जो ई कंटेंट कोर्स है ना, वो कंटिन्यूसली फीडबैक लेगा स्टूडेंट से, कंटिन्यूस फीडबैक लेगा स्टूडेंट से। और नॉट ओनली फीडबैक रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन और नॉट ओनली फॉर द क्या कहते हैं उसको, जो कंटेंट मैंने सिखाया उसके बारे में क्वेश्चन पूछा। मैंने सिखाया x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, और मैं उसका ही क्वेश्चन पूछूंगी तो बताओ मेरे को z माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट। ये नहीं, वेदर इट इज व्हाई आई एम डूइंग इट, व्हाई दैट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आई एम टीचिंग, व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड इट, वो जो जिस तरीके से मैंने उसका यूआई क्रिएट किया है वो सब समझ में आया कि नहीं। ऐसे फीडबैक हम कंटिन्यूसली स्टूडेंट से ले सकते हैं। इनफैक्ट एंड दैट कंटेंट कैन बी एब्सॉर्ब एज इट इज, and student can help you to create the content. This is one pedagogical logic भी है इसके पीछे कि when एक collaborative learning हो जाता है एक टीचर और स्टूडेंट्स का, तो एक इफेक्टिव ई लर्निंग कोर्स जो है it always seeks for the collaborative learning. Student may help you to create the content. How student, अभी ई कंटेंट एक कोर्स मैंने बनाया और उस कोर्स को मैंने फ्लोट कर दिया, इंटरनेट पे डाल दिया है, या फिर मैंने अपना जो भी कॉलेज का जो भी टूल यूज कर रहा है, कोई टीम्स यूज कर रहा है, कोई क्लाउड यूज कर रहा है, कुछ भी है, वहां पे मैंने वो कोर्स डाल दिया है, उसमें असेसमेंट्स डाल दिए, सब कुछ डाल। लेकिन ये हो गया मेरा। अभी आप देखेंगे मार्केट में ना जितने भी ई कोर्सेज है, सारे ई कोर्सेज का कंटेंट फिक्स है। स्टूडेंट सिर्फ वो कंटेंट पढ़ेगा तो वही वन वे कम्युनिकेशन हुआ ना। तो ये तो ग्रेट ई कंटेंट ई कोर्स नहीं हुआ। ग्रेट ई कोर्स कब बोलेंगे, जब उस कोर्सेस वो कोर्स में स्टूडेंट भी अपना कंट्रीब्यूट कर पाए। तो एक मैंने एक्सरसाइज यहाँ पे रखा है, बट आई एम लिटिल बिट डाउटफुल दैट कितने लोग कर पाएंगे। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन इफ यू आर ऑन क्या बोलते हैं उसको, डेस्कटॉप पे है तो आप ये कर पाएंगे। इट इज जस्ट विल डू इट इन 5 मिनट्स और आगे के 2-3 ही स्लाइड बचे हैं, वी कैन फिनिश इट फास्ट। ये एक्सरसाइज हम करके देखते हैं। bookcreator.com ये साइट पे, वेबसाइट पे जाइए आप। इज इट ओके फॉर ऑल टू डू दिस एक्सरसाइज और शैल वी स्किप इट? Yes. This is to show you that how student can enrich your contents. How student could enrich your content. तो एक मैंने सैंपल बुक क्रिएट किया है on bookcreator.com और उसमें अभी you as a student, me as a teacher, ऐसा अपना अभी यहाँ पे सीन क्रिएट करके you can write on the e-content book which I am going to which I have created. तो ऐसा एक एग्जांपल यहाँ पे एक्सरसाइज है। तो आर यू कुछ लोग करें प्लीज, bookcreator.com पे जाइए एंड जस्ट लॉग इन विथ गूगल अकाउंट, लॉग इन विथ गूगल अकाउंट। log in with Google account. As student, when it will, you will say I am a student, it will ask you to type a code given by the teacher. तो मैंने कोड यहाँ पे लिखा है HJH9RRJ, ये कोड यहाँ पे लिखा है। देखो
How many are doing it? Please raise your hands. Sorry. कर रहे हैं ना? Okay, thank you. 2. Okay, even 2, 3 is okay for the example's sake, but others also try. It is fun. It is fun doing this exercise. Okay. लॉगिन हो गया तो मुझे प्लीज बताएं जरा. ज्योती मॅम लॉगिन झालंय का तुमचं? दाभाडे मॅम. हो मॅडम झालंय. झालंय ना? हा हो हो हा. तर जरा हा कोड विचारला का त्याने तुम्हाला? हो विचारलं. टाकला. ओके. आता हो. तुम्हाला एक बुक दिसलं का समोर? हो दिसतंय. हा, तर तुम्ही त्या बुकवर लिहा. मनीषा मॅम, दाभाडे मॅमला त्यांची स्क्रीन शेअर करता येईल असं करू शकतो का आपण? त्यांना जरा को होस्ट बनवते मी. ओके. मॅम कोणते मॅम बोलले? एकदा परत बोला. ज्योती दाभाडे मॅम. त्यांना ज्योती झालं. दाभाडे मॅम. ओके हा. ओके, करते मी त्यांना को होस्ट बनवते. हा कर. एक मिनिट. हा, ज्योती दाभाडे मॅम तुमचं स्क्रीन शेअर करा. करते एक मिनिट. I cannot see the code. Please, madam. हा yes. Self kindness code, share. I अच्छा, cannot see the एक code, man. I think हाँ, there is some square. नहीं दिखा. वो मैंने चैट ऑन रखा है इसलिए. दिखा HJH 9RRJ. Yes. हा, दाभाडे मॅम तुमची स्क्रीन शेअर कर. मला अनशेअर करायला लागेल का आधी? मनीषा की डायरेक्ट मॅडमनी शेअर केलं की दिसेल? मला अनशेअर करावी लागेल आधी. तुम्हाला अनशेअर करावी लागेल, मग त्या शेअर करतील. ओके. हा हा हा. नाही, ते शेअरच विचारतोय. ओके, मी स्टॉप केलंय शेअरिंग. येस ज्योती मॅम शेअर करा. मी जॉईन करते. डेस्कटॉप मधनं थांबा. आधी तुम्ही मोबाईलवरून केलं होतं लॉगिन? मोबाईलवरून झालं होतं? हो मोबाईल मधनं चालू आहे FDP. आणि पण तो बुकवर लिहून देत नाही मोबाईल वरून. असं काहीतरी आहे त्याचं थोडं लिमिटेशन. ताहिर सर आपने भी किया था? डेस्कटॉपच आहे. No madam, I have done on desktop. हाँ तो अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लेके जरा डालेंगे बुक पे आपने? हाँ हाँ, एक मिनट मैडम. हाँ, चैट में डाल दीजिए. Only the host can share. Only the host can share in this meeting. The setting is such that. नहीं चैट में डाल दीजिए. कौन? ओके ओके ओके. हाथ पोस्ट आप स्क्रीनशॉट लेके मैम जरा चैट में डाल दीजिए. How could I share the screenshot in chat? डाल दीजिए ना, हो जाएगा. चैट पे डाल दिए. Ctrl+C Ctrl+V करिए, हो जाएगा. कल तुम्हाला आज आमचा आंबा पण टाळता नाही ते इच्छाच नव्हती.
ओके. ज्योती मॅम नाही होतंय का तुमचं स्क्रीन शेअर? ज्योती दाभाडे मॅडम काय? आवाज नाही येते बरोबर. एनिवेज मॅम मी करू का? हा चालेल चालेल करा. कोण? मी म्हणजे आता कोण म्हणाले? तन्वी तन्वी मॅम तन्वी कर ना. तू लॉग इन केलंस का? हा येस येस मॅम केलं लॉग इन आणि ते ओपन पण झालं. मी स्क्रीन शेअर करते माझं. हा. Okay. Yes, this is the screen we are using. Yeah. So now many of people are trying this. I'm very glad to see that. Very glad to see that. Yes. So now you can write. Tanvi, please write something on that book. On the next page. You can write. You add the text. You can write on this on it. Yes, ma'am. I'm trying it. Yeah. ऑप्शन नाही. वरती सेटिंग्स मध्ये जा. अच्छा. हा. आणि राईटचं ऑप्शन मॅम. ओके. तुला बुक रीडिंग आलं का? हा म्हणजे हेच आलं. जर मी लॉग इन केल्यावर मला हे दिसलं असेल. तू ऍज अ स्टुडंट लॉग इन केलं ना? तुम्ही जे तुम्ही ते इन्स्ट्रक्शन्स दिले त्या हिशोबानेच ते कोड टाकून केलं. येस. आय गेस याच्यामध्ये रायटिंगचं नाही येते काही ऑप्शन. रीड राईट ऑप्शन असतो. स्टुडंट कॅन ऍड इन टू माय बुक असं. दॅट इज वन न्यू बुक ऑल्सो स्टुडंट कॅन क्रिएट. ओके. यू गो बॅक. या बुक मधून बाहेर ये. माय बुक्स बाहेर ये. You can create mine and teachers books. You can create a books. You can create a book. Create. Actually, I got that pen, and we can write by that pen. It will select that might be pen. possible when I created book, na. Then that time Yes. I have forget to turn on that option that let students write. No, it is open. It is open, madam. You have written? I have actually I got this pen. Yes. And yes, by this tool only. Yes. So you can write in the book. So if I am creating a course, okay, very nice. So when I am like creating this. a book, see, this is my book for this e-content मैंने upload किया है. अभी मैंने ये book है, ये समझो अपना कोर्स का नोट्स है और ये मैंने इसमें डाल दिया है. बुक एक क्रिएट कर दिया है. So now student can also enter जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है वो अपना बुक क्रिएट करके टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं. सो कंटेंट एनरिचमेंट की बात हो रही थी हमारे. हम वापस हमारे इसमें जाएंगे. नाउ तन्वी प्लीज. Madam, can we type? Yeah, you can type. Okay, no, because I got this pen only, and by this pen I have to use my cursor and. No, you can type also. You can type. Okay, madam. You can type. You can insert pictures. You can do many things into that. So you can add emojis, etc. So further ऐसे और भी है tools. ये एक just मैंने book का ले. But how to encourage? हम लोग फिर से भी जाते हैं. Let Manisha please turn me again the host. मैं अभी फिर से share करती हूँ. Shall I stop sharing? Yeah, you stop sharing. I'll start again. Okay, ma'am. Share my screen. Yeah. You stop sharing, Tanvi, please. Yeah. Thank you. So see, this is like content. If you want to take content from the students in course, ऐसा नहीं कि आपको ऑनलाइन ही होना चाहिए. मैं अभी वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे नहीं हूँ, but I have created one book and left it over there. Student, and if I give link over there and share the code with the students, student can contribute in that course.
That is what the idea is. Is my screen visible to all? Yes, madam. Yeah, okay. Thank you. So now there are many apps like this. एक ये book creator मैंने आपको बताया अभी. इसके अलावा there are many apps. एक छोटा वीडियो है, ये वीडियो देखते हैं and then we will move further ahead. Bring your business online with GoDaddy. Start by finding the right domain. There's millions. Video voice is audible. Teachers don't take the lead anymore. Students do. We listen more and more to students and what they have to say. Students take the role of the teacher and the teacher guides them towards the finish. Yes, ma'am, it's audible. As teachers fall into the Thank role you. of curators, students become the new content creators. Students creating content comes with some new must-haves. Educational content creation tools. You're watching the EdTech School playlist, and in this video I'm showing you 7 content creation tools for students. I have 8 more tools for you via the blog post link in the description. The first popular student creation tool is Book Creator. Create, read, publish. That's what Book Creator is all about. Let your students create and write their own stories. Students can combine text, images, audio and video to create interactive stories, digital portfolios, journals, poetry books, science reports, manuals, comic adventures and much more. You name it, they create it. Afterwards, students can publish their books and show you or their parents their masterpieces. Book Creator is an example of an easy-to-use authoring tool for students and teachers. Next, Meme Generator. Student-created content can also be something out of the ordinary. Take a meme for example. Let students summarize a lesson by creating memes about the subject. Expect some hilarious outcomes that actually represent your lessons. It's also a fun way that correlates with your students' environment outside the school, which makes it much easier for students to remember. The third app is My Simple Show. If you're looking for a fun way to let your students do a lecture, you should introduce them to My Simple Show. My Simple Show is a simple online tool that empowers anyone to make professional videos. My Simple Show is very easy to use. Students can write their own video script or they can even upload a PowerPoint file. The first option lets them write a story and it will suggest some suitable images students can choose from and use in their video. At the end, students record their own voice or they choose between voiceovers that are given. App number 4 is Zoom. You've probably never heard of Zoom in your entire life. That's because this software is mostly used in the business world. So what is it? Well, this content creation software lets you host webinars. As a bigger project, let your students host their own webinar by giving a presentation about a certain subject. The webinar can be about anything. 2 birds, 1 stone. Students are creating content about your lesson topic and you're preparing them for the business world already. Number 5, Comic Live. It's sometimes said that students don't read many books, but what they do read are comic books. With Comic Live, you bring comics to the classroom. Let your students create stunning comics from their own images. The app has a lot of fonts, templates, panels, balloons, captions, and lettering art available to transform your student's story into a creative comic book. Students could create book reports in comic style, summarize a lesson, develop creative flyers, and so on. Next up, Spreaker. Are your students very talkative? Why not let them create their own podcast instead of writing a review? Switch things up and use Spreaker to record a new podcast episode or to stream live. Talk about an amazing digital project. How cool would it be for your students to create their own podcast about certain important persons, music stars, actors, authors, scientists, or historical events? Last but not least, Book Widgets. Book Widgets is actually a content creation tool for teachers, but students can make use of it as well. The timeline widget, for example, is more focused on content creation by students than the other way around. You create an editable timeline and share it with your students. This means that the students can add events to the timeline, write text and add images to it.
Use this timeline in history class to let students simulate certain historical events. You can also let students add events to the timeline when working on projects or experiments in science courses. They could add pictures of each step in the experiment and write down an explanation. So, these are some great apps if you ask me. Before you go, give this video a thumbs up if you got some new ideas. A click on that subscribe button would help us as well. Thanks and see you in the next video. Okay, I hope that this video is helpful for all the teachers. Now you can see those apps, you can share with the students. But when you are making an e-learning course, you should make use of such kind of apps. Various apps are available, many tools are available. You can make use of that. And why students' participation is required? Because more students participate, more they get engaged, more your course is successful. So to ensuring the successful implementation, along with this all philosophical things, कि आपने communication strategy plan करना है, quality standard maintain करना है, success matrix आपको पता होना चाहिए, आपका objectives clear होना चाहिए, training timetable आपका clear होना चाहिए, risk management आना चाहिए. इन सब चीजों के साथ साथ you must engage students more and more into your course, and definitely it will help you all these strategies to make a successful e-learning implementation course. Now, even though you create a very good course, एकदम बहुत अच्छा कोर्स आपने बनाया, लेकिन अगर उसका कंटेंट कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना है आपको. अभी मैंने कोलैबोरेटिव बात किया, एंगेजिंग बात किया, एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन, ये सब तभी होगा जब कम्युनिकेशन प्रॉपर हो. इवन बेस्ट डिजाइन कोर्स becomes useless if the contents are not communicated. तो उसके कुछ टिप्स है यहाँ पे, जस्ट फास्ट हम लोग जाएंगे, हमारा टाइम खत्म हो रहा है. दैट अगर आपने जो भी ई कंटेंट कोर्स आपने बनाया है, अगर वो क्लियर नहीं है तो लर्नर को कंफ्यूज करेगा, और अगर लर्नर कंफ्यूज हो गया तो यू विल लूज द लर्नर. सो दैट इज द रीजन you should apply effective communication which will motivate student and drive their performance, not confusing them. अभी आप बोलेंगे मैंने कोर्स बनाया, वो बच्चों को कंफ्यूज कैसे करेगा? कर सकता है. सबसे पहला चीज, the first thing, your course should be as simple as possible. ये जितने कंप्यूटर इंजीनियर हैं अभी ग्रुप में यहाँ पे बैठे हैं, सबको ये SAN में पढ़ा होगा, वही प्रेसमैन ने बताया है, keep it simple, silly. So you have to keep it simple. Simplicity means not कि आपका कंटेंट कम करो, नहीं. Simplicity means it is your talent to present your content in attractive designs. Content designing में उसे unnecessary graphics, borders, shading add करके आपका कंटेंट ग्रेट लुकिंग नहीं दिखता है. जो पॉइंट आपको बताना है स्टूडेंट को, उसका इलिस्ट्रेशन, चार्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफिक्स इस तरीके से करो कि इट विल बी सिंपल एंड इन मिनिमम टाइम में स्टूडेंट को अंडरस्टैंड होना चाहिए और रिमेम्बराइज होना चाहिए. सो ट्राई टू फेवर सिंप्लिसिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी. योर डिजाइन शुड बी सिंपल. योर कोर्स कंटेंट एंड कोर्स UI both should be simple as possible. Don't make learners think. अभी देखो ये यहाँ पे एक एग्जांपल बताया, डायग्राम स्पीक मोर. अभी मैंने यहाँ जानबूझ के यहाँ पे डायग्राम ये लिया है स्टीव क्रूक के बुक से, डोंट मेक मी थिंक. नाउ दीज आर द स्टूडेंट. अभी समझो ये मेरा एक वेबसाइट है, ई कंटेंट वेबसाइट है. अब ये ई कंटेंट वेबसाइट पे, ये मेरा वेबसाइट है, इसमें कोर्स डाला है. अब ये कोर्स में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है. हर एक जन अलग सोच रहा है कि मैं इधर से जाऊं क्या, मुझे ऐसा देखना चाहिए, बाप रे ये कहाँ से शुरू करूं. ये सोच रहा है कि 2 लिंक्स सेम दिख रहा है, कौन सा लिंक पे क्लिक करूं. ये सोच रहा है मैं इमेज पे क्लिक करूं क्या. इफ यू मेक लर्नर थिंक, योर कोर्स इज नॉट गोइंग टू मूव अहेड. इवन मैं तुम लोगों को बताती हूँ,
अभी पता नहीं है कितने लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा तो है कि मैं जब भी नैपटेल के वेबसाइट पे जाती हूँ या इवन कोर्सेरा के वेबसाइट पे जाती हूँ, अभी कोर्सेरा ने कर लिया, वो पहले आपका इंटरेस्ट लेते हैं और सिर्फ आपके जो इंटरेस्ट पार्ट है वही कोर्सेस आपको दिखाते हैं या फिर वही आपको सजेस्ट करते हैं कोर्सेस. दैट इज हैपनिंग नाउ, बट प्रीवियसली ये सारे कोर्सेस दिखाई देते थे. आई एम गेटिंग कंफ्यूज. मुझे करना था मशीन लर्निंग का कोर्स और उसको छोड़ के मैं कुछ मल्टीमीडिया का कोर्स देख लिया, ब्लेंडर का कोर्स देख लिया और सारे इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, मेरा टाइम पास हो रहा है पूरा. और मैंने जो 1 घंटा लगाया था पढ़ने के लिए रखा था, उसमें मैंने मेरा कोर्स छोड़ के बाकी सारे कोर्स का सर्फिंग करने में ही मेरा टाइम चला गया. वेरी रॉन्ग. सो अगर आप कोई ई कोर्स, ई कंटेंट या ई लर्निंग की बात कर रहे हो तो डोंट मेक लर्नर्स थिंक. You should make it as easy possible and give him a specific, जो आपका आउटकम है वही सामने रखो. सेल्फ एविडेंट होना चाहिए, ऑब्वियस होना चाहिए. There should be visual clues, there should be navigation up towards appropriate outcome, not to confuse the learner. Okay, manage to focus learner's attention. आपको ई कोर्स बनाते वक्त प्रॉपर कम्युनिकेट तभी होगा जब आप उसका अटेंशन को ग्रैब कर पाएंगे. उसका अटेंशन लूज होता है स्टूडेंट का. नॉट ओनली स्मॉल स्टूडेंट्स, इवन अभी नाउ दिस इज क्लास ऑफ 191 नाउ, राइट नाउ, बट इट मे गेट डिस्ट्रैक्टेड, अटेंशन may get defocused many times. It happens, and because of that your pace changes. अगर आप चाहते हो कि लर्नर जो है वो लर्नर आपका पूरा अटेंशन उसका आपकी तरफ ही होना चाहिए और उसने उसका पूरा वर्किंग मेमोरी आपके मटेरियल के लिए यूज करना चाहिए, तो आपका कोर्स, ई लर्निंग का कोर्स इस तरीके से होना चाहिए कि टाइम टू टाइम यू शुड ग्रैब द अटेंशन. जहां पे भी जो पॉइंट पे आपको लगता है कि अभी इसका ये अभी डिफोकस होने वाला है, बहुत देर हो गया, then you should use some unique ideas, some patterns, some motions at some focal points so that you can capture the attention. हमने ऐसा किया काफी देर तक, मैंने बहुत theory बोला आपको, then now exercise we have done. So this is how you can also capture the attention of the students. And use effective writing techniques. Use effective writing techniques. It should be concise and relevant. Effective writing skills आपको आपके ई लर्निंग कोर्स को ग्रेट कोर्स बना देंगे. कोर्सेस राइटिंग स्किल्स जो है वो आपको काफी इम्प्रोवाइज करने चाहिए. अभी राइटिंग इट इज नॉट ऑलवेज, शुड बी क्लियर, कंसाइज. आपको अननेसेसरी वर्ड्स, बहुत फ्लरिश वर्ड्स यूज करने की जरूरत है ऐसा कुछ नहीं है. नॉर्मल डे टू डे स्पीकिंग वर्ड्स यूज करो, वो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचने चाहिए. ऐसे वर्ड्स यूज करो ताकि सब लोग समझे. बहुत बड़े बड़े वर्ड्स, बड़े बड़े स्पेलिंग्स, बाप रे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो जाता है रिएक्शन. सो इट शुड बी रिलेवेंट, कंसाइज एंड इफेक्टिव राइटिंग. ओके, सो इफ यू फॉलो दिस ऑल tips of writing or communication and while designing the e-course, I hope you may do this. These are the references which I have used, multiple references which I have used. Websites, one of that website is Shift. Most of the images has taken from the SHIFT. ये website से लिया है मैंने, shiftlearning.com. Urix.com is also a good website to learn about education technologies and e-learning. Implementation is comlabindia.com नाम का भी एक है जहाँ पे सक्सेसफुल e-learning implementation के practices वो वहाँ से लिए है. So these are the references. You can also refer these all websites. Thank you. If any questions, quick, if organizers allow me, then 5 to 10 minutes we can keep for the question answers. Yes, participants, any questions?
You can type in the chat box. Link of video, yes, yeah, I'll put in chat box, yes. Link is shared. Any more questions? Share all contents. I'll share one book also with you. Let me see whether I can attach that book here. Is it one book is there, shift.com se download kiya hua hai. That also I may share with you. I'll share with organizing people. They will, ma'am, next याच्यापर्यंत टाकून द्या सगळ्या participant. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, PDF. I hope you found it useful how to create the contents in e-learning courses. And if you create any e-learning course, you will remember this all factors to be considered. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Shall I sign out, ma'am? Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for coming here and sharing your knowledge. The session was really informative and useful. Thank you once again, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you. एक सेशन संपला.